हाय एवरीवन। इस सेशन में एनालिसिस करेंगे नेचुरल गैस के बारे में कि आने वाले सप्ताह में नेचुरल गैस फ्रॉम 9 अगस्त टू 25 अगस्त में क्या लेवल्स नेचुरल गैस में आ सकते हैं, नेचुरल गैस में क्या मूवमेंट हो सकती है, कहाँ तक अपसाइड जाता है तो कहाँ तक जाएगा, एंड व्हाट आर द की फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एक अपवर्ड मोमेंटम आने के लिए, उसके लिए क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स लगेंगे। ओके, सो उस लेवल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इफ यू सी राइट नाउ मेरे यहाँ पे टू पोजीशंस एक्टिव है नेचुरल गैस में एंड ऑलमोस्ट अराउंड 14 के प्रॉफिट इज रनिंग देयर। सो व्हाट आर द एनालिसिस फॉर द द लेवल फॉर द नेचुरल गैस। सो यहाँ पे देखिए कि क्लियर कट दिस इज 1 आवर चार्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड on Friday, right, there was kind of break of structure happened about 255। ठीक है, 255 के अबव में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। So that was the reason for me to entered into the call side में इसीलिए यहाँ पे एंट्री बनी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू सी, नेचुरल गैस में एक बहुत अच्छा फॉल आया है, ऑलमोस्ट फॉल फ्रॉम 325 से, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 रुपीज तक इसने टच किया है। सो नेचुरल गैस विद इन 1 मंथ 27% डाउन फ्रॉम इट्स हाई, राइट। एंड एक बहुत टाइम के बाद यहाँ पे मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छा खासा मिला, जिसमें यहाँ पे डबल बॉटम भी बना हुआ दिख रहा है। सो प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कंफर्म इट विल गो अप फ्रॉम हियर, ओके, बट द प्रोबेबिलिटी वाइज इफ वी वेर राइट तो एक हमें यहाँ पे अच्छा खासा गेन हो सकता है। सो इंपॉर्टेंट चीज वही होती है कि जब भी आप मार्केट में सही हो, राइट, तो आप आपका मैक्सिमम गेन लेके वहां पे निकलो, और जब कभी भी ट्रेड आपके अपोज में जाए तो एक कम से कम लॉस के साथ में उसमें हमें कट करते आना चाहिए, राइट। सो अभी नेचुरल गैस में फॉर मंडे व्हाट विल बी माय एनालिसिस, राइट। सो अभी देखो नेचुरल गैस का फ्यूचर इज ट्रेडिंग अराउंड ऑलमोस्ट 2.70, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग on Monday natural gas will open above this level. If suppose natural gas open above this level 258.90 एंड एक पूरा का पूरा एक कैंडल बॉडी के साथ में अगर 258.70 के अबव में क्लोज देता है तो देन दिस लेवल विल बी एक्ट एज अ सपोर्ट एंड देन माय प्लान विल बी कि ये ट्रेड को मैं और ज्यादा होल्ड करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 269 तक का, राइट। सो ऑलमोस्ट अराउंड द इन्वेस्टमेंट इज अराउंड हियर 4 lakh and I will expect it will give me around 1.5 to 2 lakh profit, right? That was the expectation. But what else, right? Agar what will be my exit plan? So the last lower low, right? I will still not say it's a lower low because it has, it has broken this one, but it has not broken the last, you know, uh, the last higher high. Okay, so it needs to first give closing above this 258.80, then 253.80 will be its lower low, right? So the plan will be like if any of the 5-minute candle close below 253.80, no doubt I will book the loss, half loss here, and then further if it close below 252.252, then I am going to exit my whole position. Then the downside levels can come up to 238, right? So these are the levels for the natural gas. The good thing is the Friday closing was above this CPR, right? By the time we are above this CPR, no need to worry as such. And another point is just a minute. Yes. Okay. By the time we are above this dotted line 254.6, right? We are good. My view will be like, the buy on dip by the time we are above these dotted lines. Okay. So this is much important for us. Let's see whether these levels can come or not in the upcoming days. But yeah, if our analysis is work, if as per the expectation, the market moves, the natural gas move in our direction, right? So the above upside 263, then 268, then 280, 290, 305, and 326. These are the levels are possible, right? But in this case, what we are trying to see, we know the levels like where it can go up and at what levels it can take a pause, right? So we'll keep like that. How can we increase the profit? So when it start going up, so ideally first like
around 263, we'll try to book some sort of profit, and then again it comes down, the retracement happen, we'll again enter position. That's how we will keep doing scalping, trying to get the maximum points as much as we can. And yeah, this is what the plan for the 15 days for the natural gas. So if you like analysis, stay tuned and must watch the Nifty analysis video for expiry 11th August. Stay tuned on the channel. Thank you so much.